Assalamu alaikum, dear students. This is the fourth part of Roman civilization. It is about the fall of Roman Empire. Important Roman landmarks: the arena where gladiators fought, providing Roman citizens with hours of entertainment. Colosseum scrolls were found in this building, helping us to learn about ancient Rome. Libraries: the court of law in Rome, Basilica of Constantine, built as a temple for the gods' pantheon. Five stories of shops for people to buy and sell goods, Trajan's market. These are the important landmarks of Roman. It was the review. Now we will discuss the fall of Roman Empire. The fall of Roman did not happen in a day, it happened over a long period of time. There are a number of reasons why the empire began to fail. Here are some of the causes of the fall of Roman Empire. Invasions by barbarian tribes, barbarian groups like the Goths had encroached beyond the empire borders. रोमन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग तस्वुर किए जाते थे और जिन्होंने 800 ईयर्स अपनी एम्पायर को रन किया, वो मुख्तलिफ बारबेरियन ट्राइब्स की वजह से उनको डाउनफॉल आया। एक रीज़न जो है वो बारबेरियंस थे, और जिसमें रोमन सिटी को जो है वो तस्वुर किया जाता था कि अनकंक्वेरेबल है, जबकि जर्मनिक बारबेरियन जो था उसने इसको रोमन सिटी को जो है वो अपने अंडर किया था। उसके बाद वेंदल्स जो हैं वो जर्मनिक लीडर्स ओडेसर stacked a revolt and deposed the emperor Romulus Augustus. इसके बाद कोई भी ऐसा रूलर इटली से जिसने हुकूमत की हो, कोई भी ऐसा रूलर नहीं आया जो कि इटली टू से वहाँ से रोम के ऊपर गवर्न कर सके। रोम वाज crumbling from within thanks to a severe financial crisis. Uh, Constant wars and overspending had significantly lightened imperial coffers. Oppressive taxation and inflation had widened the gap between rich and poor. बहुत गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए बहुत से टैक्सेस की वजह से जो रिच थे वो रिच हो रहे थे और पुअर बहुत पुअर हो रहे थे, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन भी पैदा हो गई और बहुत सी जो है वो थर्स्ट बढ़ गई और बहुत ज़्यादा बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो शॉर्ट होने शुरू हो गई। रोम्स इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन स्लेव्स टू टिल इट्स फील्ड एंड वर्क एज क्राफ्ट्समैन, क्योंकि वो सारे काम स्लेव्स के ज़रिए करवाते थे और क्राफ्टमैन भी वही थे, इसलिए वो जिस तरह चाहते थे इकानमी को कंट्रोल कर लेते थे। When expansion ground to a halt in the 2nd century, Rome's supply of slaves and other war treasures began to dry up. Within its economy faltering and its commercial and agriculture production in decline, the empire began to lose its grip on Europe. The rise of the Eastern Empire was one of the reasons of downfall. The Eastern Roman Empire or Byzantium fell in 1453 to the Ottoman Empire. Many poor people were glad to see Rome fall. They were starving to death while being taxed heavily by Rome, so they were happy. Near the end of the Roman Empire, the city of Rome was no longer the capital. The city of Mediolanum, now Milan, was capital for a while, and later the capital was moved to Ravenna. Rome was sacked once again in 455 AD by Gaiseric, king of the Vandals. The Vandal were an Eastern Germanic tribe. The term Vandalism comes from the Vandal. ईस्टर्न एम्पायर चूँकि बहुत बड़ी एम्पायर होने की वजह से इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, जिसकी वजह से ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर बन गया और दोनों के डिफरेंट एम्परर्स थे।
लेकिन इक्वली वो इस काबिल नहीं रहे कि उनकी कोऑर्डिनेशन से कोई इम्प्रूवमेंट आती। इस वजह से इनका सेपरेट हो जाना भी डाउनफॉल को करीब ले आया। ओवर एक्सपेंशन एंड मिलिट्री ओवर स्पेंडिंग। At its height, the Roman Empire stretched from the Atlantic Ocean all the way into the Euphrates River in the Middle East, but its grandeur may have also been its downfall. With such a vast territory to govern, the empire faced an administrative and logistical nightmare. बहुत बड़ी भी होने की वजह से और मिलिट्री के वीक हो जाने की वजह से भी डाउनफॉल आ गया। Government corruption and political instability. If Rome's sheer size made it difficult to govern, ineffective and inconsistent leadership only served to magnify the problem. Being the Roman emperor had always been a particularly dangerous job, but during the tumultuous second and third centuries, it nearly became a death sentence that you are the emperor of Rome. Civil war thrust the empire into chaos, and more than 20 men took the throne in the span of only 75 years, usually after the murder of their predecessors. बहुत ज़्यादा सिविल वॉर्स बढ़ जाने की वजह से और बार बार के एम्पर के मर्डर्स की वजह से जो गवर्नमेंट है वो वीक हो गई। With the fall of Rome, many changes occurred throughout Europe. Rome had provided a strong government, education, and culture. Now much of Europe fell into barbarianism. The next 500 years would be known as the Dark Ages of Europe. This was the part about downfall of Roman. इसके साथ ही ये एम्पायर जो है वो ख़त्म हुई और उसके साथ उसके डार्क एजेस जो हैं वो स्टार्ट होगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको रोमन सिविलाइजेशन की बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसके साथ ही इसके सारे पार्ट्स कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। उसकी सिविलाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स भी आर्ट और आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग और उसकी रीजंस ऑफ डाउनफॉल ये तमाम कवर हो जाती हैं। होपफुली यू हैव एंजॉयड एंड अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।